किम्स हॉस्पिटल, ये है कंपनी आज हमारे साथ न्यूज पर यूज सेगमेंट में, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर ग्रुप है। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर राव साहब, और हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं एक स्पेशल पर्पज से। 80 करोड़ में एक एक्विजिशन किया जा रहा है कंपनी की तरफ से, SPANV मेडी सर्च प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जरा इस एक्विजिशन के बारे में राव साहब से जानकारी ली जाए। सर स्वागत है, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं सर, ये किस तरह का एक्विजिशन है, इस एक्विजिशन करने के पीछे क्या पर्पस, क्या ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब चीज इसके बारे में जो भी डिटेल्स आप शेयर करना चाहें सर। गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ हैप्पी टीचर्स डे, टुडे बीइंग ए टीचर्स डे। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। So this is the acquisition we did in Nagpur, as you mentioned about, from two doctors, and one of the promoters has been built 2019, started functioning, and then it is always better to join with a good group to give the good corporate governance and as well as the good clinical branches we can able to provide to the Nagpur. That was the mindset of the doctors who are working there as a shareholders. So they approached us, then we went around and took over this one as a 51% stake. The purpose is because these people have been joined and they want to, they are all having 25-30 years of experience in their own field. So with their experience and the new modalities and new therapies which we can able to add to that Nagpur hospital, so they approached us, we are going to put it there. It is always better to stay the entire doctor fraternity who are going to work, and over a period of time they can able to slowly merge either with KIMS, or we can able to buy the shares if they want. That is the purpose. So here there is a good facility, good infrastructure. The doctors are very good, and the patient satisfaction was very high when we looked into that. And then it is the right thing which we want to do. As we were looking in the roadshow, we were mentioning that we want to go for a central India is our target, because the Andhra and Telangana we have been nearly done about 3,600 beds, including the Sunshine what we have done about couple of quarters back with that 3,600. So now there is not much of a scope in Andhra and Telangana to expand further. So we want to continue in the business for a long period of time, and we need to show the good growth to the investors. What we have been last 2 decades, whatever the growth we have shown, we would like to show that will come only by the existing facilities and as well as the further expansion. So Perfect. That is the purpose of going there and to acquire this. परफेक्ट। सो दोनों ही स्ट्रेटेजी है कंपनी की, एक तो एक्सपेंशन करेंगे खुद के हॉस्पिटल्स अलग अलग जगह खोलकर, और दूसरा कोई अच्छे एक्विजिशन के मौके जैसे कि ये नागपुर में मिला है वो एक्विजिशन भी करेंगे। डॉक्टर साहब ये भी बताएं सर कि जो आपका ऑर्गेनिक एक्सपेंशन है, जो नए हॉस्पिटल से आप बेड जो बेड कैपेसिटी आप ऐड करना चाहते हैं, वो कैसे करने जा रहे हैं, वो भी बताएं सर। Basically, we are going on to mostly a mixture of organic and inorganic. The reason is, if we are able to balance that, wherever we get a good opportunities of organic or semi-organic, our first preference is to go and put the money in there. When there is no opportunities are available, still we find there is a potential market is there where there is a need of healthcare for the society. There we would like to go and build with an organic way. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही आपके करने का इरादा है। ये बताएं सर कि क्या कोई फंड रेजिंग प्लान्स भी हैं इस कैपेक्स को पूरा करने के लिए, एक्विजिशंस को पूरा करने के लिए? So as of now we don't require any funds, and we are very prudential about deploying of the capex, because the last 2 decades we see that we are very accurate of deploying the funds. So we don't require any money as of now. For the next 1 year also we have sufficient funds. The 2-3 whatever we have been committed, for that we have sufficient internal accruals only. Whenever there is a feature that comes, depending upon the asset and depending upon the value creation, then whether we should see whether we borrow a little more of, we have a lot of leverage on the balance sheet, we can able to take debt, and then we will be able to see whether we can able to provide a growth to the investors. Okay, perfect. अच्छा सर, ये तो आपके एक्सपेंशन प्लान्स की बात हुई,
और आप नए हॉस्पिटल्स भी खरीदने जा रहे हैं जो आपने एक्विजिशन किया, उसके लिए एक बार आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह से आपके और एक्विजिशन होते रहे। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर जी बिजनेस। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। बाजार इस बीच मजबूती के साथ सेंचुरी मार्केट निफ्टी पर 100 पॉइंट ऊपर है और बैंक निफ्टी पर 300 पॉइंट ऊपर है, मजबूती के साथ टिका हुआ।